There is heavy rainfall that we've witnessed across northern India. We've seen how it has wreaked havoc, especially in the hill states of Himachal Pradesh and of Uttarakhand. Himachal Pradesh being the worst affected. But Delhi is not untouched either. We've seen that a surging Yamuna River has caused flooding in Delhi in parts of it. It poses now risks to residents that live in low-lying areas. Currently, the river Yamuna is above the danger mark of 205 meters. Evacuation advisories have been advised. And all MCD schools, which are government-run schools, are closed as a precautionary measure. Delhi's Lieutenant Governor V.K. Saxena visited one such area this morning of Yamuna Bazar to take stock of the situation. He said that the main reason behind waterlogging near this particular area and the rest of Delhi is inadequate cleaning of sewage and untreated drain water. Meanwhile, the Delhi Traffic Police on 11th of July said that vehicular traffic is affected on the C hexagon at India Gate due to a road cave-in. Remember, this is the third such incident in the last 1 week that has been reported in the national capital of a major road caving in of a crater that is being seen. And what's worse is that this incident comes from the heart of the national capital. It's near India Gate, a busy tourist location as well. जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। Delhi CM Arvind Kejriwal has assured about several sort of arrangements given that Yamuna is actually flowing above the danger mark, and has assured people and in fact has asked not to worry. There are areas where water has entered in the household, and in fact I'm standing in one such house where water has in fact entered, and you can see in the visuals in fact these people have been asked to vacate the area, but they are saying that they are living here since years and now it is very difficult to shift the all items and the essential needs. I'll try to talk to the person. पानी कब आया आपके यहाँ? पानी जी कल से मतलब सुबह से स्टार्ट हो गया आना 10 बजे से। हाँ, बढ़ गया मतलब धीरे धीरे एकदम से तेज से बढ़ा, अब भी बढ़ रहा तो अब धीरे धीरे बढ़ा बिल्कुल। तो इस ये जो कमरा है हम देख रहे हैं इसमें पानी है, तो आया है। तो इसमें सामान था, पलंग वलंग था, वो गीला हो गया, अब इसको बाहर निकाला हमने। 2 घंटे सामान निकालने में लग गए। पिछले साल भी हमारा बहुत सामान नुकसान हुआ था। घाट में कीचड़ हो गया था, 5 से 10 हजार रुपए लगे हमें पूरा घाट साफ कराने। पर्सनल हम अपने पैसे दे के साफ कराते हैं इस घाट को पूरा। प्रशासन से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ मदद का भरोसा है? प्रशासन ने अभी बोट के अंदर आया था, अलर्ट करा था उन्होंने कि पानी आने वाला है, छोटे बच्चों को नजदीक अपने घाट के किनारे पे ना जाने दे और अपने सामान की देख रखें और नदी से थोड़ा दूरी रहें। तो आपसे ही बोला गया कि इलाका खाली कर दो? अभी इलाका खाली करने के लिए तो नहीं बोला, बाकी कल वो आए थे, क्या नाम है तुम्हारे पुलिस वाले, वो बोल के गए थे कि पानी बढ़ेगा। With monsoon season, the Delhi NCR region is in fact brought to knees by the heavy rain that is being experienced by the people in Delhi NCR. And with the problems, we are seeing that the traffic, the waterlogging and also the road that has in fact been caved in. There have in fact been incidences where there have been reported how there are in Rohini and Janakpuri earlier there were road that was caved in because of the heavy rain. Now in the central Delhi itself you can see this is C hexagon near India Gate where the portion of the road has in fact been caved in over here, and the entire region, this entire part has in fact been barricaded now at the moment by the Delhi police, and the traffic police has also in fact put in a tweet saying that this road should be avoided at the moment because the work will start. But this is what is happening. In fact, we have been seeing since the monsoon session, since the monsoon season have started, there has in fact been incidences of how there have been such road caves in, waterlogging everywhere, most of the region, and we are seeing how the parties are in fact indulged in blame game. The BJP and the Congress have in fact been attacking
the Aam Aadmi Party of not really working with the MCD, with the PWD to ensure that the state is in fact ready for the monsoon season. And now it is in fact the commuters, it is the common man like you and me who are suffering because of the unpreparedness that we are seeing on ground. The national capital is also reeling under nature's fury, but the worst affected are two states of Uttarakhand and Himachal Pradesh, the hill states which have seen the most amount of landslides, of roads and homes being washed away altogether. विशाल गर्ग, my colleague joining us from Uttarkashi now from Uttarakhand. विशाल, वहां की स्थिति अब क्या है? काफी सारे लोगों को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया गया है। कल चीफ मिनिस्टर की देर रात तक बैठक भी हुई है इस बात पे। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ा बारिश का कम है क्योंकि अभी बारिश रुक गई है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। मेरे ठीक पीछे ये भागीरथी नदी बह रही है जो कि उत्तरकाशी से होकर के गुजरती है और अभी इसका वेग अगर आप देखेंगे तो इतना तेज है, इसका बहाव काफी तेज है। हालांकि जल स्तर अभी बढ़ा हुआ है काफी, और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अभी इसका पानी और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में जो आसपास के एरिया में जो लोग बसे हुए थे उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। उनको कहा गया है कि वो नदियों से थोड़ा सा ऊपर की साइड चले जाएं, क्योंकि पानी अगर बढ़ता है नदियों में तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में या फिर आसपास के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो ऐसे में लोगों को कहा गया है कि सावधानी बरतें। जिला प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद देहरादून से बैठ करके राजधानी से वो लगातार इसका अपडेट ले रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर पूछा है कि क्या अभी स्थिति है, क्योंकि उत्तरकाशी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तरकाशी में भारी से भारी बारिश अभी होने की और संभावना है। हालांकि क्योंकि अभी भी देखिए, जैसा हम लोगों ने बताया कि अभी थोड़े समय पहले ही कि गाड़ियों पर पत्थर आकर के गिर गए थे और 3 गाड़ियां जो कि पत्थरों की चपेट में आ गई थी, जिसमें 4 लोगों की डेथ भी हो गई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में यात्रा मार्ग को पर जो कांवड़िए जा रहे थे उनको भी रोका गया है। 4 धाम यात्रा के लिए जो लोग आ रहे थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो जगह जगह जो रोड्स भी ब्लॉक है, तो ऐसे लोगों को रोका भी गया है जो वहां पर आवाजाही कर रहे थे। तो अभी थोड़ी देर टाइम का ब्रेक लगाया गया है ताकि यात्री सकुशल यात्रा कर सके, क्योंकि अभी जो कांवड़िए हैं वो गंगोत्री में जल लेने के लिए आ रहे हैं, उनको भी अभी उत्तरकाशी में ही रोक दिया गया है ताकि किसी तरह का पैनिक ना फैले। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी नदियों का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है और काफी दिक्कत जो है वो डराने वाला जो जल का वेग है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो यात्री हैं उनसे तो अपील की गई है, साथ ही जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद लोगों को भी हटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उनके पास किसी तरह की समस्या ना आए, उनको इजीली खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम जगह जगह मौजूद है और जहां पर पहाड़ आ रहे हैं, पहाड़ों से पत्थर आ रहे हैं, उन जगहों को क्लियर करने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर देर रात से ही लोग फंसे हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जी। और विशाल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स भी काफ़ी हुए हैं, काफ़ी पहाड़ों से पत्थर गिरने की भी रिपोर्ट्स आई हुई हैं, उसके वजह से काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज, काफ़ी सारे रोड्स जो हैं वो भी ब्लॉक हो चुके हैं, उससे भी काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं। स्टेट प्रशासन को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में 100 से ज्यादा स्टेट हाईवे हैं जो कि बंद हैं अभी, और ऐसे में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीमें वहां पर तैनात हैं और रोड को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ की 8 टीमें उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि उनको हर संभव मदद पीएमओ से मिलेगी। किसी भी तरह की अगर कोई भी चिंता होती है तो वो डायरेक्ट पीएमओ से भी हेल्प ले सकते हैं। हालांकि देखिए, स्टेट की जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है वो भी लगातार यहाँ पर काम कर रही है। तमाम जगहों पर स्टेट डिजास्टर की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं, जहां पर रोड ब्लॉक हो गए हैं, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम चल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि 100 से ज्यादा ऐसे स्टेट हाईवे हैं जो फंसे हुए हैं और कई गांव ऐसे हैं जिनका आपस में कनेक्शन टूट चुका है, तो उन पर भी काम चल रहा है, क्योंकि ऐसे में लोगों को दिक्कतें ना हो, उनको खाना पीने की जो सामग्री है वो पहुंचाई जा सके। तो उसके लिए देखिए, तमाम जो जिलों के प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी डीएम्स को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में नजरें बनाए रखें और किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले वो सीएम तक पहुंचे ताकि उसका स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके और वक्त रहते अपने लोगों को बचाया जा सके। इसके लिए तमाम तैयारियां स्टेट प्रशासन ने और जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी
Gee, monitoring is taking place from Dehradun by the Chief Minister, by the central government as well, the Prime Minister himself keeping a close watch. Vishal, thank you so much for getting us the latest on that. But let's look at some of the dramatic instances that have come to the fore from across these hill states. Let's begin with Himachal Pradesh, because that has been the most worst hit as far as this entire nature's fury is concerned. These are visuals that are coming in from Shimla, where you can see the building that has completely submerged. That used to be a college. The river Satluj overflowed because of the heavy rain that we saw, because of which this particular college and the surrounding buildings are all completely submerged. Moving on to what transpired in Uttarakhand, like my colleague was also bringing us a situation from Uttarkashi, but this is Chamoli, where a bridge was washed away. There was a glacier burst that was reported. The bridge entirely gives way and then is completely washed away with the current, with the force of that entire river that is flowing in full strength like many other rivers in the northern part of this country, including Yamuna, which is why even Delhi is now on the edge. Shifting focus now to another such defining moment as far as nature's fury is concerned. Look at these visuals on your screens. That house, that settlement is in a precarious position. This is from Jubal. The building is on the verge of collapse. Another heavy downpour is perhaps all that is required for that house to come crashing down, which is why people from there have been evacuated to safer ground already. Now that was the situation in Himachal Pradesh and in Uttarakhand, two hill states. But what happens to the city that's in the middle of it, the national capital, Delhi? These are visuals from the heart of the capital city. This is near India Gate. Look at that crater. There is a hole in the middle of the road caving in the middle of the day when there's heavy traffic on that particular stretch of the road. And this being the third such incident in the national capital just within a week. In Delhi itself, there is another place in Janakpuri where a similar crater was witnessed. Look at that. A big hole, a big chunk of the road just caving in. That crater is 10 to 12 feet wide. It's 8 feet deep. This happened in the Janakpuri area of the national capital. Thankfully, nobody was hurt in the incident, but it has led to massive traffic snarls. It has led to diversions on key arterial stretch roads that we've seen across the national capital. It is a weekday. We've already seen the kind of traffic snarls that have happened because of water logging. Add to these instances of road caving in multiple places. It has only added to the troubles of the Aam Aadmi here in the national capital. Akash, my colleague, joining us live. Akash, you have been reporting from the Yamuna Bazaar area since this morning. It was one of the low-lying areas which remains to be in a precarious situation. Now I believe you're in central Delhi. What's the situation like there? Right, so I'm standing near India Gate and, we'll show you the hole, in fact, that you were talking about. This is the India Gate Circle and Poonam, this is a VIP area. This comes under NDMC and is Latvian zone, and we know that how important this area is, given that we have a number of foreign dignitaries, coming on a daily basis to the national capital and, visiting the government offices and also the embassies. So this is one key road that got caved in. In fact, I'll ask Ravi Ranjan ji to show you the visuals. There you see, in fact, the JCB work is still on, and because of this, traffic is disrupted. You see, there you see the line of these cars. In fact, this is an important area and traffic is disrupted because of this particular hole. And, as you rightly mentioned, this is not the first incident. We have seen the condition in Janakpuri, we have seen the condition in Rohini, we have seen the condition in Greater Kailash and now in the central Delhi as well. This is not the only problem as far as, rain activities in the national capital and in fact in the northern parts of India are concerned, because we have seen that how river Yamuna is in fact flowing above the danger level mark, in fact has crossed 206 level. Thousands of people have been evacuated, and in fact in the morning I was visiting a number of low-lying areas. Yamuna Bazaar is one of those low-lying areas, and there we have people who are actually worried about increasing water level, because water has entered in their houses, and they are either forced to leave the place or are forced to live in that a submerged house. So, problems are, it is not limited to just one or two issues. There are a number of problems, and as of now,
Delhiites are facing these problems because of on and off rainfall. Also, we have seen politics over this particular issue because, in fact, in the morning today, LG VK Saxena, while visited Yamuna Bazar area, said that because of not carrying out the desilting work properly and because of no work throughout the year, this is the kind of condition that Delhiites are facing. He was somewhere targeting Delhi government, but as of now, we have Saurabh Bharadwaj from Delhi government who is in fact taking the LG VK Saxena. So we have got politics as well. On one hand, we have problems that are faced by people here in the capital city. On the other hand, we have politics where both, LG and the Delhi government are involved in this, tug of war kind of situation. But once again, if I can show you the visuals, the traffic is affected because of the particular hole. This is a VIP area in the national capital. In fact, the central Delhi India Gate circle, and there we have got this road caved in, and in some time from now. In fact, I remember, Poonam, yesterday how CM Arvind Kejriwal mentioned that because of the weather conditions, we cannot carry out the maintenance work, and that is the reason why some sort of alternates are selected, and in fact some sort of temporary solution is preferred at the for the particular work. However, at this point in time, we have traffic police and also civil administration working for the betterment and working to help all those who are looking for some, and in fact in some days from now things are expected to be better. Right, we're hoping that the things are better as far as the national capital goes. Currently, it's not raining. There seems to be little respite coming to the fore as far as traffic snarls are concerned. Akash, do stay on with me.